So this is day 3-4 and time is 5:14. Date is 23rd March. I am leaving from Jaipur. Bike is all set. Good morning guys, look at the sunrise. ओम सूर्य देवाय नमः। मेरी बेटी मेरे को बार बार बोलती है हर सुबह जब भी स्कूल ड्रॉप करने जाता हूँ, पापा ओम सूर्य देवाय नमः बोलो। मिस यू बचा। अभी तो बहुत अच्छा लग रहा है। थोड़ी देर बाद सूर्य देव अपना ग्रहण प्रकोप दिखाएंगे। वाओ, आई थिंक आई शुड टेक ए ब्रेक। चाय पीना है, मॉर्निंग टी अभी तक हुआ नहीं है। It's almost 7:20 now. I think I'm doing pretty good as of now. आगरा बस क्रॉस हो जाए, बिकॉज आगरा में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ज़्यादा भी नहीं, वाहियात होता है। Yeah, Agra is 114 kilometers. So let's open the throttle. I have no clue you guys are able to hear clearly, because I am sure there will be a lot of wind blast, because I could sense it or I could hear it inside my helmet. This part of the journey has become very very boring yaar. How can I ride this way?
So here I have stopped to कुछ खाने पीने के लिए लिया है मैंने, क्योंकि लखनऊ हाईवे पे कुछ मिलना नहीं है। लखनऊ हाईवे पे कुछ मिलता नहीं है ना। एक पानी की बोतल और दे दे भाई। हाँ तो मिलेगा खाने पीने का, एक्सप्रेस वे पर नहीं मिलेगा। हाँ एक पानी की बोतल दे दो। आप कहाँ के रहने वाले? है तो यार राजस्थान के, बट बॉम्बे से आ रहे हैं। इसमें पानी और फिलअप कर लेता हूँ। तो पानी का भी इंतज़ाम हो गया अपना। Now I can ride till Lucknow without stopping. So now time to fuel up. वैसे तो है, but don't want to take chance because बताया जा रहा है कि there is no petrol pump on this expressway. फुल टैंक कर दो। तो ये आगे ले रहा हूँ गाड़ी। लखनऊ तक। So I'm at Agra Lucknow Express Highway, and this is my bike. It's doing pretty good so far. It's fully loaded. But बहुत boring journey है यार. There's no one around. It's just straight road, boring road. Well, I think it's another 180 kilometers to Lucknow. Time to leave my chain, I believe. Agra Lucknow Expressway. I'm leaving my chain.
गार्डन में घूम लो यार, यही सड़क पे ही प्यार जताना पूरा। चलो भाई।